the right of Mr. Siolekar is Mr. Adir Gaur. He is the Honorary Secretary of the GIA. To the left of Mr. Siolekar is Mr. Sandeep Trehan. He is the Treasurer of the GIA. And to my immediate left is Mr. Hari Natarajan, Board Member, GIA. Many years, but donning a different hat this time. I'm organizing the summit, so I'm leaving it to the gentleman here. It's also my pleasure to welcome amongst us a patron and a former president of the GIA, Dipali Shah Gandhi. Dipali, there you go. Thank you for joining us, Dipali. I'm going to start by requesting Mr. Siolekar to please address first. The most beautiful golf property in the country, the DLF. So, welcome and thank you so much for finding time and making it to this event. So just to tell you a little bit about the GIA, it was formed in 2011, and golf has a couple of bodies. There is a professional body, there is a women's professional, then there is a amateur body. So these bodies run their own program and concentrate on their mission that they have. GIA was formed with a purpose. Since I also own the golf course, I realized that, the industry doesn't have any binding as such together. So we formed this. I mean, most of them here have been together for the last 10, 12 years. Industry of golf is a small industry. It is more the manufacturers, the golf course owners, the tour operators, and various such industry-related companies and agencies, international and national, architects, golf designers. So we all got together, and slowly this has grown from strength to strength. It started with 10, 12 people, and now we are a very strong 65-member GIA where, right from irrigation to machinery to golf course ownership. So it became a very strong organization over time. This has all happened because all of us have the same vision, the mission to more than grow the game, connect each other to the game. So the whole idea is networking. People didn't know each other. Manufacturers didn't know what's happening in the north and south of India. And India is a large country. So automatically, the annual summit is a purpose and a reason to get together, to know each other, to do business with each other. Finally, end of the day, they're coming all this way, spending money, exhibiting, speaking. So the whole idea is to network and grow the game by growing the business together. So this is the purpose. So we have equipment manufacturers and machinery manufacturers. All kinds of people are involved. Probably this 11th edition is the largest summit and turf program that we have. This year we innovated and started the Greens program. Now what is a Greens program? A Greens program is anything to do with turf. Turf is grass. So anything to do with grass. This is a very highly technical kind of a field. I mean, as the golf course owners, most of us know, and I know, that it is not easy. It's like a life. It's our life. We have doctors who treat us. Similarly, turf is also needs treatment, management, infection, parasites, what all. So we have started the Greens program to train the Indian agronomists, the Indian agriculture students, the Indian superintendents to upgrade themselves, to come to the next level. For that, there are a lot of programs happening. Then we are also tying up with the Australian, I think given to you, is to give a program where certification can happen. What happened till now is we used to always get people from abroad, from America, from London, from Australia, who used to be the green superintendents at high salaries of $5,000 and $6,000 US. And then they had people under them, and then the golf courses went to this quality and level that you can see. So we want to train that. So that's our golf turf management program. So this is the new thing that we are introduced. It's already we have 50 members on board, which is great. Every golf course in this country we have connected to. So that's the new program. So this time we have a greens section, a complete greens program. We have experts in agronomy who are going to talk, speak, and do practical display of how machines work, how pesticides, fertilizers are used, and etc. So I think this is the uniqueness of this time's summit. Well, other than that, I think we have some very good speakers who will speak more about how do we develop this game further.
See, growing the game of golf is not very easy because the golf courses need a lot of space, it needs a lot of time and things like that. But the game is growing. There are a lot of champions from India, Indian golfers from the professional circuit that are happening. आज का कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये स्पोर्ट ऑफ गोल्फ के विषय में, आईडी सब लोग ऊपर करो, इंडस्ट्री के विषय में। एंड यहाँ पर हम सारे गोल्फ के जितने इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, जैसे कि गोल्फ कोर्स ओनर्स, आर्किटेक्ट्स, कंसल्टेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, इक्विपमेंट के, मशीनरी के, घास के बारे में मतलब जो टेक्निकल लोग हैं, ये सब सारे जितने भी लोग इस बिज़नेस के साथ जुड़ते हैं, इनका कॉन्फ्रेंस है। सर आगे 2 दिन के कार्यक्रम में आपका क्या एजेंडा रहेगा और क्या कुछ आप नया लेके आने वाले हैं? एजेंडा तो एजुकेशन है। तो एजुकेशन इस क्षेत्र में, इस खेल के क्षेत्र में जो एजुकेशन होगा कि ये गोल्फ कोर्सेज कैसे बनाए जाते हैं, या तो इसके साथ साथ में जुड़े हुए और कितने सारे फैसिलिटीज़, अलग टाइप के बिजनेसेस, अलाइड बिजनेसेस कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों को जैसा ये गेम बढ़ता है, नौकरियाँ भी बढ़ती हैं, तो जो मतलब किस फील्ड में कोई करियर बनाना चाहता है, ये सारी चीज़ें का काफ़ी सारा नॉलेज हो जाएगा। और ये बाहर के और विदेशी और भारतीय जो स्पीकर्स हैं, ये सारे काफ़ी नामचीन स्पीकर्स हैं जो हर सब्जेक्ट में, जैसे कि क्लब हाउस हो या गोल्फ कोर्स हो या ये स्पोर्ट हो या मशीनरी हो या इक्विपमेंट हो, हर एक के ऊपर काफ़ी ज्ञान और नॉलेज बांटेंगे। प्रैक्टिकल यहाँ पर काफ़ी सारे ये मशीन के एग्जीबिशन मतलब एक्चुअल यूज़ का दिखाया जाएगा। फर्टिलाइज़र यूज़ कैसा होता है, कम करना चाहिए, ज़्यादा कर, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसमें और आगे बढ़ के ये ग्रीन्स के प्रोग्राम में और पढ़ाई करके कैसे करियर बढ़ा सकते हैं लोग, ये हर चीज़ के ऊपर ये विषय मतलब सबमिट में होगा। एक चीज़ आपने पूछी क्या नया होगा, इसके बारे में मैं बोल सकता हूँ। हमारे पास बहुत सारे विदेशी कंपनियाँ आई हैं इस बार पहली बार, जो कि नए इक्विपमेंट लाई हैं और हमारे हिंदुस्तानी गोल्फ कोर्सेज को दिखाने के लिए, जो कि गोल्फ कोर्स के मेंटेनेंस में काम आती है। तो वो इस बार डिस्प्ले भी हो रही है पहली बार इंडिया में। कितने आपके गोल्फ प्लेयर्स कितने पार्टिसिपेट करने वाले हैं और उनकी तरफ से क्या कुछ रहेगा? एक्चुअली ये गोल्फ का, जैसे सर ने बोला, ये गोल्फ का आपस में हम सारी इंडस्ट्रीज़ के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनका समिट है, तो वो सब आएंगे, अपनी अपनी चीज़ें दिखाएंगे जिससे कि गोल्फ को बढ़ावा दिया जा सके। और हम एक दिन एक गोल्फ का छोटा टूर्नामेंट भी कर रहे हैं, जिसमें वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको खिलाया जाएगा इसी एलएफ़ गोल्फ कोर्स के ऊपर। और मेन काम यह है कि सबको हम बता सकें आपस में कि हम क्या क्या दे सकते हैं उनको, क्योंकि उनको ज़रूरत है जानने की कि क्या क्या चीज़ पॉसिबल है, इसलिए समिट रखी है। एक्चुअली ये स्पोर्ट और ये क्रीड़ा और ये खेल नहीं है, ये समिट जो है ना, ये एक्चुअली इंडस्ट्री का एजुकेशनल प्रोग्राम है। और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, इवन नेबरिंग कंट्री नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका से भी लोग। सर इनॉग्रेशन कैसे किसके द्वारा किया जाएगा सर? लेडीज़ विमेंस गोल्फ के जो अध्यक्ष हैं कविता सिंह जी, वो आएंगी, क्योंकि आज जैसे अभी भारत में ये वुमेंस एम्पावरमेंट भी बहुत हो रहा है, वुमेंस कोटा भी हो रहा है, तो हम चाह रहे थे कि वुमेंस अध्यक्ष जो है वो ही इनॉग्रेट करें, तो कविता सिंह जी इनॉग्रेट करिए। टाइमिंग 10 बजे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।